जो पिछले लेक्चर में था उसमें हम सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिक्योरिटी इश्यूज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज मीन्स व्हाट आर द सिक्योरिटी इश्यूज इन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। सो अगर हम बात करते हैं सास की, तो ये तो सब लोगों को पता है कि सास मॉडल मीन्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में क्या होता है, कौन सी चीजें हमें एसपी देता है, मीन्स सर्विस प्रोवाइडर कौन सा देता है, और कौन से उसमें ऐसे एक्शन होते हैं जो एक यूजर के थ्रू किया जा सकता है। एंड वन मेजर थिंग कि जितने भी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू दी जाती है। मीन्स we can say that in software as a service model, the client need to be dependent on the service provider for the proper security measure of the system, and the service provider must ensure that their multiple users do not get to see each other private data. मीन्स अगर हम दो लोग हैं, मान लो एक मैं हूं एक और कोई और है, दो लोग किसी एक एसपी से मीन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से क्लाउड की सर्विसेज ले रहे हैं, तो उसमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म इस तरीके से होगा और वो सर्विस प्रोवाइडर ही बना के देगा दैट one person's data cannot seen by another person, or one data cannot affect the data of another person, or one company's data cannot affect the data of another company's, or one company data with one company data another company persons cannot interact. और ये सारी चीजें करने के लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ता है, बीइंग एज ए सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर को इंश्योर करना पड़ेगा दैट वी हैड अडॉप्टिंग अ राइट सिक्योरिटी मैकेनिज्म so that no one can interrelate or no one can interrupt your data without your permissions. And cloud computing providers or service provider need to provide some solution to solve the common security challenges that a traditional communication system face. And at the same time, they also have to deal with other issues inherently and introduced by the cloud computing paradigm itself. And these are the some mechanism or the some security issues in software as a services, like as the authentications, or we can say that authorization, data confidentiality, availability, information security, data access, network security, data breach, and identity management and sign-on process. These are the some security issues related to with the software as a services. So first thing, when we talk about the authentications and authorizations, then the meaning of authentication means, or the meaning of authorizations means, only authorized person can access the data. Only authorized person can access the data. Means if I am an authorized person by the company to access the particular data, then only I can access the data. No another person can access the same data. Means हम ऑथेंटिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे. So only authorized person can access the data, and the authorizations and authentications application used in enterprises environment need to be changed so that they can work with the safe cloud environment. Forensic task will become much more difficult since it will be very hard or maybe not possible for investigators made to access the system hardware physically. Second one is the data confidentiality.
मीन्स जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल, मीन्स बात केवल अपने अंदर तक ही रहे, किसी दूसरी कंपनी के अंदर वो डेटा ना पहुंच जाए। सो ये हमारा डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी है। मीन्स अगर हम डेटा को प्रिवेंट कर रहे हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन से, so we can say that confidentiality refer to prevention or unauthorized disclosure or distributed of security private information. And this one, confidentiality is closely related to the area of encryption, intellectual property rights, traffic analysis, covered channels, and inference in the cloud system. Whenever a person or a company or an organizations या फिर कोई भी एजेंसी want to share information over cloud or want to share information over the internet, then confidentiality or privacy is a question may need to be asked. अगर किसी चैनल के थ्रू होकर के मेरा डेटा जा रहा है या आ रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है, तो वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी का क्वेश्चन अराइज होता है कि डेटा जो हमारा एक जगह से दूसरी जगह किसी मीडियम के थ्रू आ रहा है, जा रहा है, तो क्या वो सुरक्षित है? ऐसा तो नहीं है बीच में कोई तीसरा पर्सन उसे देख लेगा। थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी. So availability ensure the reliable and timely access to the cloud data or cloud computing resource by the appropriate person. And the availability is one of the big concern of cloud service provider, since if the cloud service is disrupted or compromised in any way, it affects large number of customer than in the traditional model. Next one is the information security, means superset of data security. So information security means अगर हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज की बात कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज मॉडल की बात कर रहे हैं, then the data of enterprise is stored outside of the enterprise boundary. Means कि मैं अगर क्लाउड ले रहा हूं, क्लाउड सर्विस ले रहा हूं, तो वो किसी तीसरी कंपनी से ले रहा हूं, किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से ले रहा हूं सर्विसेज। तो अगर मैं डेटा स्टोर कर रहा हूं तो वो डेटा हमारे कंपनी या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर स्टोर ना हो करके तीसरी कंपनी के पास स्टोर हो रहा है, जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। So this is the meaning of that data is stored outside the enterprise's boundary. And the data are, which one is at the SaaS vendor premises. So the SaaS vendor need to adopt additional security feature to ensure data security and prevent breaches due to security in the applications or by malicious employee. Next one is the data access. So data access issue is mainly related to security policies provided to the user while accessing the data. Organizations have their own security policies, and based on which each employee can have access to a particular set of data.
These security policies may be adhered by the cloud to avoid intrusions of data by unauthorized user. And the SaaS model must be flexible enough to incorporate the specific policies put forward by the organizations. नेटवर्क सिक्योरिटी मींस जो भी हम नेटवर्क एस्टैब्लिश कर रहे हैं उसके बीच में सिक्योरिटी अप्लाई करना. बिकॉज अगर हम सास की बात कर रहे हैं या फिर सास डिप्लॉयमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं, then it will be highly sensitive or it have a highly sensitive informations from the various enterprises or from the various organizations. And all vendors will store their data on SaaS premises. And the flow of data from the vendor to the customer or from the customer to the vendor will flow from any network. So it will be mandatory to secure the network which we are adopting for the transferring of the data. Next one is the data breaches. So we know that the data from various user or various organizations will come up in the cloud environment or in the SaaS deployment model. And breaching the data into the environment will potentially make the data of all users vulnerable. Thus, cloud become a high potential target. And last one is the identity management and sign-on process. So ID management means identity management means that, or we can say that ID management is the area that deal with the identifying individual in a system and controlling the access of the resource in that system by placing restrictions on the established identity. जो भी पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, जो भी सीएसपी इन्वॉल्व है, सबकी एक आईडी मैनेजमेंट होती है, आइडेंटिटी होती है, सबकी आइडेंटिटी होती है दैट वी आर द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, आई एम द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती है, कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म होती है, उन सबको हमें फॉलो करना पड़ता है. And IDM will be considered as the biggest challenge in information security. Identity management is the biggest challenge in the information security. When a software as a service provider want to know how to control who has access to what system within the enterprises, and it becomes a lot more challenging task. So these are the security issues in software as a services model or software as a services deployment model. Now, next, what will be our proposed solutions for these type of security issues? So first one is what matrices can be used for reporting? What is the level of access control? Is provided data such that it can be easily adapted into internal monitoring tools to preventing the data soils? And the last one, how important and critical the enterprise's data is.
So all these 4 points will be discussed in the next lecture.